Assalamu alaikum dear students. Ajuk son topic chu Q data structure. Putmis videos mun wucha se stack kya go, the operations on stack, the applications of the stack. The ajkis yat videos mun wucha was ajkis topics wucha was Q kya go, the कुछ operations है perform करित हम Q, and what are the various applications of the Q. Q data structure. Q data structure. क्योंकि data structure क्या हो? Data structure is a way of storing and organizing the data. Is a way of storing and organizing the data so that we can perform various operations on it efficiently. क्या जी? इसके कैंचे store तो organize करान data on the memory तो तिशु सुगो तनुक data structure of the data. क्योंकि अजुक जो से ये topic छु तो Q data structure Q क्या चीज़ बनन Q क्या गो एक example निमो real life example आख निम्बर. So let us try to explain this Q with the help of this that real life example. For example, you have ticket counter. You have ticket counter. Ticket counter sheet. For example, ticket counter special ticket card. आख नफर को सुगो येतनस खड़ा स्टार्टस एम पता ब्याक नफर सुरूद येतनस एम पता ब्याक नफर सुरूद येतनस एम पता ब्याक नफर सुरूद येतनस गो अगलेट गोडुक नफर आव सुरूद स्टार्टस पे एम पता देम नफर वारी पन्नी प्यारा एम पता त्रेम नफर एम पता सूरम नफर एम पता पुंजम नफर क्योंकि ऐसा टिकट में शुरू कर दिन इशू कर गोडने ऑब्वियसली गोडने गोडुक नफर छ सुनी टिकट ने एम पता देम नफर सुनी टिकट ने एम पता स्ट्रीम नफर नी टिकट एम पता सूरन एम पता नी पुंजम गो वन बाय वन येतन तोरा सी फिक्री ते उछु कि गोडुक नफर ओस फर्स्ट इस नफर अदमस आयो तमी नफर नी गोडने टिकट दैट मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल फिटनेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस गोडने थाव सुई द्राव गोडने इस गोडने क्यूएस में साव युसा लाइन में गोडने साव रू खड़ा तमी नी गोडने टिकट दैट मींस सुई द्राव एम लाइन में गोडने नफर एम पता देम नफर देम लाइक सुई द्राव एम पता त्रेम सुद्राव त्रेम नंबर्स पर एम पता सूरन सुद्राव तो सूरन नंबर्स पर तो this is a real life scenario of Q data structure. Then what is the data structure? Q is Q data structure क्या चु? First, this Q data structure is based on the principle of first in, first out. इस गोडने कयो in line में सुई द्राव गोडने. First in, first out. या first come, first serve. Go. It is based on the principle of first in, first serve. First out. First in, first out. क्योंकि इमसाक इसे इस Q छु इमसाक Q पर मकर बेटनस Q use it follows some rules. It has some rules. It can as M stack data structure पर stack data structure में वन में कि ताकि insertion as well as deletion गसान from the same end अकी end की नज़ गसान insertion ते deletion ते तो जिस तमें principal laws so last in first out. क्योंकि इस Q data structure पर आई इतना अन्य किस principle जो first in first out. That means इस गोडनेट युवान छु सुई छु गोडनेट नेरान. The element inserted first is the element deleted first. इस गोडनेट element insert करान छु सुई गज गोडनेट delete. तो इस Q data structure आज के restrictions. It has some restrictions so far as insertion as well as deletion is concerned. The operation insertion to deletion use insertion Q as part कारण या deletion अच्छी restriction इसके restriction क्या है restriction चाहिए कि Q as में insertion ते deletion का सान इनके सान two different end पे insertion से का सान एक end पे एक end side ते deletion का सान से back side. That means we can say that Q has a two open ends. Q has the open end. You have अगर Q निमो
اتھ چھِ زٕ اوپن اینڈ یور چھُ اوپن یور چھُ اوپن اکہِ سایڈٕ گژھان چھِ انسرشن بیٚکہِ سایڈٕ چھِ گژھان deletion. We can say that a queue has a two open ends and the insertion of data takes place from one end and the deletion takes place from the another end. Each side is an insertion, big side is an deletion. Whereas this is straight board, that is a open end. Top key, top is insert the element, top is the delete the element. But that is queue has open end. It has two open ends for insertion as well as deletion. Insertion takes place from one end and the deletion takes place from another end. Because insertion, yes, more technically, insertion is insertion from the and that end is rear end. Rear. Insertion takes place from the rear end. For example, agar I queue open ends, open ends. Yapar şu ark end, yapar şu ark end. Yah end is rear end. Yapar insertion gets. And deletion takes place from front end. In queue, the insertion of the data, insertion of the element takes place from the rear end. That means we can insert the element into the queue only from this end, which is rear end. And we can delete the element from the queue only from front end. That means the front end. Go x-axis karan you go rear end, you go front end. Front kinches karan delete, the rear kinches karan insert. Kasmus queue data structure. More technically, insert status one, more technically, insert status one and queue. And queue. The delete status one DQ. It can says status means element insert karnas one push the element delete karnas one pull. The more you think technical term yes insertion causes such an NQ. NQ means what is NQ? NQ it is the process of inserting element into the queue. Element insert current QS means touches one NQ operation. And the process of deleting element from the queue, the process of removing element from the queue is called DQ. DQ go and element in our current. Kai muse queue muse. The insert element karnas is one NQ. The DQ one is karnas element delete karnas. Okay. The you see rear is one kunsata one you see rear is one tail. The you see front achona head. For technical term yes, so far as queue is concerned, the technical term for queue is rear and front, not tail and head. Technical term is rear and front, not tail. Means such as tail. You just go tail, you go head. So far as queue is concerned, it is called the rear end and it is called the front end. You have to insert current element, that is on a rear end. You have to delete current element, that is on a front end. या पर insert करांचे element, add करांचे element ताकि rear end होना, या पर remove करांचे element ताकि होना front end. Go, जितने तो का degree, you see queue the queue is a data structure. It's a linear data structure. Linear, yeah, it is a order list in which the deletion takes place from one end, and that end is called a front end, and the insertion takes place from another end, and that end is called a rear end. That means deletion and insertion takes place from two different ends. Acceleration gasani kenna. Because you state data structure and has four, that means deletion as well as insertion only from one end. That kind of section on the top end. The yet insertion from rear end and deletion from the front end of the queue. Okay. Because introduction to queue topic queue as abstract data type. Abstract data type means implementation of queue implementation initial implementation next videos. So yet is working of key logical representation of the queue. And with logical representation concept of queue that we are going to explain here in this video. Okay. So
try to explain it is logical representation. For example, logical representation checks it can assign Q, which it is a Q data structure, and this is it is logical representation. Because it has two ends. One end is there. This end is called rear end, and this end is called front end. याद थयो तहे क्यों ये एंटी रियर कर इस्तेमाल या एज अ फ्रंट कर इट डिपेंड्स अपॉन यू अच्छा का रेस्ट्रिक्शन तो ये थयो रियर या ये थयो रियर ये थयो फ्रंट या ये थयो रियर तो इट डिपेंड्स अपॉन यू इट इज अप टू यू मगर एक्चुअली ख्याल थाउन कि यस इंसर्शन तय करियो सगस ओनली फ्रॉम द रियर एंड एंड यस डिलीशन गस सगस फ्रॉम द फ्रंट एंड फॉर एग्जांपल अगर तय पन्नी जाय ये थो आसे तय थो ये रियर पूरा तय मिचरा ये थो फ्रंट ये करू फ्रंट तेले गस यापर इंसर्शन यापर गस डिलीशन समझ यवं go you have to follow the rule it is up to you to kus on you rear kus on you front but you have to follow the rule for insertion as well as deletion of q this rule should here that insertion takes place from the one end that end is called rear end and the deletion takes place from other end that end is called the front end now is one after two open ends don't end open I can see you are yeah near okay for real life में अगर इसको रियल लाइफ में अस लाइन अख शिफ्ट कुछ रोजान तील अन्न से गसान दुकान पे रोजान खड़ा यह गोडन सह तुलान तील तो नारान तम पे सह तुलान तील तो नारान गो गोडन सह गोडन तमिस पे सह नारान तमिस पे रियल लाइफ एग्जांपल ये ओके तो यतन क्या लेट अस ट्राई टू explain the various operations that can be performed on the queue with the help of this logic this array it is an array implementation this array yak moin to us karo koshish us kus operation hako at queue aspect kit what are the various operations that we can perform on the queue chunki gwanet agar tai matlab theoretical part am kya queue what is a queue data structure what is a queue is a linear data structure yeah a queue is a order list which follow the principle of the FIFO first in first out FIFO first in first out first in first out that means the element that is inserted first is the element deleted first the element is going to insert gasan chu so element is going to delete gasan number 1 what is the queue data structure it is a data structure it is a linear list it is the order list it is a in which follow the principle of the FIFO first in first out number 2 in the queue data structure, the deletion takes place from one end and the insertion takes place from the other end. Deletion takes place from one end and that end is called the, what is that end called? Deletion takes place from one end, that end is called the front and the insertion takes place from other end, that end is called the rear. That means this insertion that takes place from the rear end and deletion takes place from the front end. That means it has two open ends. Q has two open ends. One end is from inserting element, adding element, and that end is called rear end, and the other end is for deleting an element, and that end is called the front end. Okay, this is a data structure Q. And but you see Q, for example. This kind of operation, what are the basic operations which one can perform on the queue? First one, go and queue. 5. DQ. Peak. Yeah, one also is front operation. Bhavan in catch karan. Is full. Is empty. In addition to these basic operations, we can perform a lot of operations on this queue data structure. And allow the कोई सारे operation aspect करे तो गवर्नर चे NQ वन में हुई तस yes insert करने element. तब जिस technical term से that is the NQ. And what is NQ?
It is the process of inserting element into the queue from the rear end. That operation is called the NQ operation. That's just one NQ. Insert करना. The queue क्या हो? It is the process of deleting an element from the queue. The process of deleting an element from the queue from the front end. Front end can delete करना element that's just one DQ. That's just one DQ. Okay. For example, when क्या queue छु मैं उन्हें queue आ जब साथ इस queue implement ऐसे करना implement बनाऊँ obviously we require a size. अच्छे size तम खतर ज़रूरत अच्छे कुता बुर queue छु ज़रूरत. For example, ये तक size निम्बा इतना 5. Go आप queue अच्छे में बनाऊँ या तुम तो 5 element हैक store करें. Go size of queue use में छु सुचेत में कुता 5. For example, it's just queue 1, 2, 3, 4, 5. Aak 2, 3, 4, 5. क्योंकि ये तम सुधा करन array representation karan. For example, I am going to implement a queue with the help of an array. Array representation sudah karan. So that means index will start from 0, 1, 2, 3 and 4. क्या जी स्पोर मुझे array पर मुझे size शास्त्र बड़ा यूज तमिक index के साथ 0 to size minus 1 क्योंकि size छु 5 minus 1 size minus 1 को 5 minus 1 so वो 4 को last index क्या कहते हैं 4 क्योंकि विंकस किसी queue छु में इसे empty की ये छु empty क्या जी हम छु क्यों बना रहे हैं छु खाली छु as queue खाली size यो थोड़ा we have only declared the queue of size 5 we have not put any element yet in this queue we throw asking just queue element okay याद छु थावन यम साथ ये fact variable fact pointer तो ये rear pointer इन जो pointer ये अच्छी rear किंची स्त्रावन तो fact किंची या स्कडान element m मसल rear किंची add करान element तो fact किंची delete करान element m मसल remove करान element यम साथ ये fact equal to rear equal to -1 ठीक है वो यम साथ fact to rear दोनों variable fact to rear दोनों आसन बराबर -1 that means क्या है वो -1 0 प्लस का start index that means governing element is q has choose 0 minus मान क्या हो 0 निशी boom 0 निशी कम that means या पर कहता है go hypothetically we assume that the q is empty that is then front and rear equal to -1 the q is empty यम साथ -1 rear is छु you see pointer छु अन्युक्त तो ये फ्रंट छु यम साथ दोनों छु -1 बराबर आसान that means तिम छिन यत मुझ आसान तेरी कुनी नशु येतनस क्या यस यो क्यू छु एक्चुअली क्यू छु ये 0 पे चोरस टाइम छु अन्युक एरिया अत मुझ छु निवाई कुनी 0 1 2 3 and 4 क्योंकि इशु -1 that means it is somewhere below the 0 निसी नेबर छु काटतानी गो इशु आई मीन नेबर यम साथ आई मीन नेबर छु आसान that means q is empty tension से याद थावन यम साथ empty q ये टेंशन में लिखमुत is empty ठीक है ना फंक्शन ऑफ is empty मतलब क्या हो is empty return is true when q is empty इसे true टाइम साथ करा return इसे return करा true यम साथ q empty है that means under flow condition empty विंडोस या under flow condition विंडोस under flow condition टाइम साथ return का सान यम साथ front rear दोनों यासना से -1 क्योंकि यम साथ इस पागा implementation करो या q with the help of array या with the help of linked list तम साथ actually working of queue logical representation of the queue current we are here discussing the queue as the administrative data type so when front equal to rear equal to -1 that means when both front and rear is equal to -1 that means the queue is empty then क्या queue हम साथ empty या सचू खरी okay गवर्नर से चेक करें क्या अगर मैं डिलीशन एमएस करें छी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मुझे एलिमेंट से डिलीट करूं नेक्स्ट में एलिमेंट का साथ डिलीट मतलब डिलीट करने ब्रोट में ये चेक करूं क्या यू सी क्यू छु ये मा छु एम्प्टी ये मा छु खाली अगर ये खाली हो तो हैप्पी बॉडी डिलीट करें किन क्या ये ना आपको ओसे के तो बैक में डिलीट करें किन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक वेदर दिस क्यू इज एम्प्टी or not. If this queue is empty, then I cannot delete any element from that queue. Back time with yeah, so you element delete. Then
The condition for that is when the front and rear equal to -1, both. When donway front to rear is barabar -1, that means the Q is empty. Okay. For example, when Q is empty, then I'm part should be assigned when Q is element problem. You should empty Q, chunki you should rear side here, you should rear side, you should front side. Then I want to insert the element into the Q. For example, a function of call kara and Q argument should be 5. 5 should be pass kara, so should be add. And Q is a function of which has the argument 5. That means I have to add the element 5. Mesh kara element 5 add. But mesh pata yes addition rule चाहिए yes addition of element का संच insertion of element का संच in the Q that takes place only from the which end that is the rear end. उस insertion का करेगा कोई rear end स्किन क्योंकि उनके शुमे initially शुमे rear ते front -1 इसमें कहता है यहाँ पर वो गवर्नर शुमे अनुनीय गवर्निंग position पे. First of all I have to move both front as well as rear position first. That means index 0. Index 0 तक में करूँ move. बकार गवर्नर front plus rear plus. ठीक है गो फ्रंट ची और दोन कहता है रियर फ्रंट को ना प्लस मतलब क्या होस फ्रंट क्या होस -1 आज गस प्लस आज क्या गस प्लस मतलब ही गो प्रेनिस वेल्वेस गस आक इंक्रीमेंट दैट मींस योस -1 आज गस +1 -1 +1 सो तको 0 तो रियर ते गस प्लस रियर ते क्या होस -1 आज ते गस +1 सो तको 0 गो दन वे बोथ फ्रंट as well as rear छिमे पॉइंट करन का कोन 0 ओके गो गस गॉनेस वातनाउ फ्रंट रियर कतस फर्स्ट पोजीशन पे ये फर्स्ट पोजीशन पे वातनाउ दैट मींस 0 इंडेक्स पे वातनाउ फ्रंट रियर देन आई कैन insert the element or at that location that location पे हक insert element पत करना nq5 या में रो में 5 ओके गो इसके कर में को कि front को ना प्लस rear को ना प्लस क्या जो empty Q empty means yours -1 को ना +1 so बनो 0 that means you put 0 पर तो rear के was -1 after को ना +1 प्लस तो ये वो कितना 0 को दोनों में was 0 and after that को में insert of the element 5 then and पर जो हम ब्याह की कारण nq 10 दे ब्याह फंक्शन कॉल गई करने आई के 10 का सबसे आत्मस add बह क्या करता हूं क्योंकि वनकस दोनों फ्रंट रियर यम करा 0.0 कुछ दे मिनट क्या कर पूरा थोन जोन अम साथ करनस कम मे कर खाली एलिमेंट कपर कर इंसर्ट रियर किन न कि फ्रंट किन मे कर बह कर रियर प्लस खाली कर रियर योर प्लस न कि फ्रंट आज कर फ्रंट ति रियर ति क्या करो एम्प्टी क्यू यह -1 यह पे 0 पे वातनाउ न को रियर प्लस रियर क्या was 0 1 0 प्लस का was 1 सो बनो 1 गो प्लस 5 मतलब गो रियर पॉइंटर वोत न कितनस जतनस तो अन पत को मैं इंसर्ट आप 10 जतन थ्रो में 10 बैक फंक्शन कॉल आई -1 कि रियर या nq का सत -1 प्लस -1 ये त्राउन छु मैं छु केस करा पॉइंट करान छु मैं you see rear क्योंकि इंसर्शन से गसन ओनली फ्रॉम रियर एंड बस तवे मूव करना रियर फ्रंट में पन जाए फ्रंट में मूव करन के क्या छु करन मूव तिकाजी इंसर्शन भी छु करन दे nq भी छु करन मूव के तिकाजी nq इस गसन से ऑपरेशन सो ओनली फ्रॉम व्हिच एंड दैट एंड इज कॉल्ड रियर एंड मैं को रियर प्लस बे करबे इतना रियर प्लस दैट मींस यो आई एम गोइंग टू रियर 1 इज गच प्लस गो प्रोन गच 8 ऐड प्रोन 8 गो ब्याह के क्या बनो 2 सो बनो 2 गो रियर पॉइंटर was 1 तक यू वाज न कतनस यू को मूव यू वाज न 2 तक एंड पत कर बात -1 ओके गो इट कैन शिट बकरान इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट्स nq as मुझे हम याद इन से nq में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर इस रियर आसान छु सुजी पे ऑन द गोनेट इंक्रीमेंट एंड after that I could insert the element at that location then but had but that location but insert the element but what is the current who's real only real not front
फैट छु पन्ने जाय क्या छु पन्ने जाय because the insertion of elements takes place from only rear side. Insertion of elements is khali kap rear side na ki front side ki. For example utai kinne no what chu masla shriya pointer I pat sare ko bya function gay dq पूर थ जगह dq function गई कॉल क्योंकि यह कोई न कोई आर्गुमेंट पास में लोग dq टोटल dq मजबाक थोनी यह किहिन में क्या ही में किहिन आर्गुमेंट तिकाज में से पता यस डिलीशन करना है dq मतलब क्या गो deleting an element from the q removing an element from the q from the which side front side तिकाज अच्छा पता ये डिलीशन का सान से सच का सान का कोई qs में का सान है फ्रंट किनत अमिक प्रिंसिपल अमिक रूल कि डिलीशन से गसान फ्रंट किनत इंसर्शन से गसान रेयर किनत क्योंकि मैं से डिलीशन करें dq मतलब वो डिलीशन करें क्योंकि मैं क्या सोचने यतनस कि या से आर्गुमेंट आई मौजूद कि युस फ्रंट मोस्ट एलिमेंट छु युस साइड फॉर द फ्रंटस का युस एलिमेंट छु सो गछि डिलीट दैट मींस ये 5 गछि डिलीट यदन क्या करबा कम दिस चीज छ यदन dq फंक्शन कर कॉल दिस चीज छ बकर या करबा सॉरी फ्रंट प्लस प्लस रियल छु पानी जाए टू स्टेप मैं कर फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट प्लस प्लस से मतलब वो फ्रंट और 0 की पोजीशन तक यू वोट 1 की पोजीशन तक ओके सिंपली करबा फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट प्लस प्लस मतलब गो फ्रंट की सोच कत न स्टैंड पर यू सी 5 छी यू रोज न पार्ट ऑफ क्यू किहिन क्या पार्ट ऑफ क्यू से सुई रोजान तिमै एलिमेंट क्यू यम फ्रंटस की क्यू अस दरमियान आसन फ्रंट पे क्यू अस तानी आसन तिमै छी अगर ये पता ये टाइम फ्रंट क्यू तो फ्रंट क्यू अगर ये पता ये तो यो फ्रंट ये इतना मिनस क्यू से इतना दैट मीन फ्रंट 1 पोजीशन पे क्यू छ दोनी पोजीशन पे खाली 10 and -1 नमज एलिमेंट छ एलिमेंट्स ऑफ द क्यू यम छ आनी बाकी छी यम मान यम छ क्यू के यम छ आउटसाइड द क्यू क्योंकि अगर फ्रंट प्लस प्लस को यू सी फ्रंट व्हाट्स व्हाट वन इज दैट मींस यू सी 5 0 to index source you draw क्यू means never you draw क्यू means never तो मैं you show garbage elements you show means garbage and we don't care about the garbage garbage value खतर छ न ऐसे विषम जरूरी के यम करो कोई बात न तो लोग थोड़ ठीक है आज यम सब दे मिला अगर का ये करो इस्तेमाल करो ये क्यू बे करो अगर बदलाव आसुस का वैल्यू प्रूवन का ऑटोमेटिकली इरेज ओवर रिटर्न तो इसलिए सुन जरूरी क्या बकर सॉरी फ्रंट प्लस प्लस ये फ्रंट प्लस प्लस you got an hotel 10 square. You want position number 1 square. हाँ मुझे ब्याह पीक फंक्शन से तब ब्याह कितना पूरा तो पीक क्या मतलब को या पीक पॉइंट was या फ्रंट पीक फंक्शन returns that value located at the front position of the queue. इच करा return सु value use front position पे छु. The value return the peak function return the value located at the front position of the queue without deleting that value. तक वैल्यू डिलीट करने वरई क्योंकि ये तो कब खोली फ्रंट प्लस प्लस एम को डिलीट ये मत लो यू गो डिलीट एम मस यू गो रिमूव क्यू मस इधर या पर मगर अगर बक्स या खान नसा बकरहान ये डिलीट की है मैं वो चाहिए और खोली फ्रंट पोजीशन पर कुछ वैल्यू छु इस 0 तो अगर विन कैसे फॉर एग्जांपल विन कैसे में बजट नसोइन 1 स्ट्रक्चर से फ्रंट पोजीशन के फ्रंट चेस करा पॉइंट 1 स्ट्रक्चर से वैल्यू 10 तो आई वांट टू नो व्हिच वैल्यू इज प्रेजेंट एट द इंडेक्स फ्रंट at the index at front position. Use front position that whose value present and at present the front is pointing to index 1. Front का टेंशन के index 1 पर. अगर मैं ऐसा 10 बुझूं बाका टेंशन p क्या कर p इसके not कर front function दोनों एक करा रिटर्न. The function से करा रिटर्न value that present at the front position. Without deleting that value. Deletion करा क्या खाली है अटेंशन 10 मगर वैल्यू रोज लिखती हाँ अगर मैं dq को फंक्शन चलेगा सी फ्रंट की गसी डिलीट दिस इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट हियर dq एंड फ्रंट या पीक करा वैल्यू अगर कुछ ना फ्रंट पोजीशन पे कुछ वैल्यू छु सु रिटर्न करा डिलीट सुन करा के वाले जो dq छु सु करा ऑटोमेटिक करा खत्म या सु डिलीट करा q मुझ करा यहां पर ओके ये पीक स्टाइल एमसा dq पूछू बेस करें का फ्रंट चोती 1 to 2 ठीक है मैं कुछ गई बस वो यहाँ ब्या फंक्शन गई dq पूछू पूछ जो दोन dq गो में ब्या dq या ब्या फंक्शन गई फ्रंट चुनकस मानस गोनस में करूं फ्रंट बकर फ्रंट प्लस प्लस
क्या कर फुचोस बे कर रियर प्लस प्लस याद थो एन क्यूब बे कर रियर प्लस प्लस पत उस त्रावन ये कर फ्रंट प्लस प्लस मे को फ्रंट प्लस प्लस अम मतलब गो इस फ्रंट उस 1 यह कतनस 2 पे तय वो ये फ्रंट 2 रियर 2 दोनों कर पॉइंट 2 फ्रंट एज वेल एज रियर समझे फ्रंट एज वेल एज रियर अम पे मे डिक्यू फ्रंट को प्लस प्लस मे को ऑटोमेटिकली यह 10 गो खत्म गो यम सात फ्रंट वुचू इक्वल टू रियर वाइट फ्रंट टू रियर सा बराबर पॉइंट एक्सी लोकेशन पॉइंट कर तुम वातन बराबर तमिक इंडेक्स दैट मीन्स दैट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू सह लास्ट एलिमेंट क्यू क्या त्रे त्रे एलिमेंट 5 10 तो -1 5 कोर डिलीट 10 को अत क्या गो -1 लास्ट तक साइज सोरन तन मगर अ त्रे एलिमेंट अत मज इंसर्ट अ त्रे एलिमेंट 5 10 तो -1 कोर्मुत ये जन साइज हको बे कर मगर चूंकि ये लास्ट एलिमेंट अम पे अगर मे बे कोर फ्रंट इक्वल टू रियर चूंकि फ्रंट रियर बराबर इक्वल टू रियर फ्रंट इक्वल टू रियर दोनों फ्रंट रियर बराबर समझे अक्सी लोकेशन कर पॉइंट दैट मीन्स दैट पे गो डिक्यू अम पे कर फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट यम फ्रंट रियर देखने लास्ट एलिमेंट्स पे फ्रंट को प्लस प्लस फ्रंट ये प्लस प्लस को दैट मीन्स फ्रंट वो 3 पे तय वो फ्रंट कतन वो 3 पे रियर कतन पे दोनों पे दैट मीन्स फ्रंट बोर्ड रेयरस फ्रंट वैल्यू सह बोर्ड कम रेयर खुद ये सात फ्रंट बन बोर्ड रेयरस फ्रंट ग रेयर खुद बोर्ड दैट मीन्स क्यू एम्प्टी तम मतलब गो क्यू एम्प्टी जो चीज एम्प्टी कंडीशन रियर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू -1 ये दोनों रियर तो फ्रंट आज बराबर -1 स्टार्ट सोस तम सात या ब्या कंडीशन हेक सेट कर ये रियर ग फ्रंट खुद सॉरी फ्रंट ग रेयर खुद बोर्ड फ्रंट आ रेयर खुद बोर्ड चूंकि फ्रंट वनकस 3 रियर बोर्ड दैट मीन्स क्यू इज एम्प्टी अंडर फ्लो कंडीशन अंडर फ्लो मतलब गो आई कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट मोर बह फ्रॉम दैट क्यू बह अम मुझ डिलीट एलिमेंट कर क्यू ओके यह गई अंडर फ्लो कंडीशन तो ओवर फ्लो कंडीशन कम सात मे वो इज फुल यह कर ओवर फ्लो यह ट्रू ये क्यू आ फुल दैट मीन्स ओवर फ्लो कंडीशन फॉर एग्जांपल मे कर ब्या फंक्शन ये 4 ये 5 मे वनकस क्यू फुल मे वनकस क्यू नम 3 कर मे डिलीट तुम तो बनाए मे क्यू फुल पूर वो चूंकि साइड से 4 बहुत गो ये क्यू मतलब गो ये फ्रंट यह क्या रियर अम मतलब गो रियर मे कतनस 5 पे फ्रंट वात सह वात मे कतनस योतन वात मे डिलीट कर चूंकि नम एलिमेंट मे वन समझे ओके बस रियर क्या वनकस रियर कत बराबर 5 मीन्स 4 दैट मीन्स साइज इक्वल टू साइज -1 दैट मीन्स रियर इक्वल टू साइज -1 साइज -1 रियर योतान साइज -1 बाकी रियर बराबर साइज -1 साइज क्या 5 -1 4 गो रियर कत 4 बराबर अगर रियर वो बराबर साइज -1 दैट मीन्स यह वो लास्ट पोजिशन पे बह अम पे कर एन क्यू अत मज बह इंसर्ट कर एलिमेंट अत मज कहें क्या क्यू फुल वेन रियर इक्वल टू साइज -1 कंडीशन ये सात रियर बराबर साइज -1 दैट मीन्स क्यू इज फुल दैट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन तम सात कस कंडीशन ओवरफ्लो कंडीशन ओके गो दिस इज ऑल अबाउट द वे क्यू इंट्रोडक्शन टू द क्यू क्या गो क्यूस कम रूल्स पे अप्लाई कर फॉर डिलीशन रेस्ट्रिक्शन कम तो कम ऑपरेशन क्यूस पे बेसिक ऑपरेशन वो एन क्यू डी क्यू पीक इज फुल इज एम्प्टी अलाव तक ऑपरेशन अत पे कर मगर दिस आर सम बेसिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस क्यू वो सवाल वो बह वो नम कर नम गई डिलीट थी न चूंकि नम एलिमेंट मे वन अगर बह ये नो एलिमेंट ये एड कर I want to add another element. बस यह 4 तो 5 फुल बह कहें क्या रियर बराबर साइज -1 यह वोत मैक्सिमम साइजस पे मगर अगर वो नम गोनिक एलिमेंट खाली नम 3
आग 2 3 यह मैं डिलीट कर मे थ्रेट वोतमुत दोमी पोजिशन पर यह ूर पे यस लोकेशन 1 तो पोजिशन पे त्रेमी पोजिशन लोकेशन 1 0 1 तो 2 नम 3 पोजिशन 0 1 तो 2 मे खाली मगर इंसर्ट बह एलिमेंट अत कर कहें गो इवन इफ आई हैव ए मेमोरी मे अत मगर बस इंसर्ट कर क्या इंसर्ट कर क्या अमुक रूल इंसर्शन फ्रॉम द रियल साइड सह गई अपर आमुत यह फुल योर बह खाली मगर योर आमुत फुल गो इंसर्शन बह कर एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द क्यू यह अमुक ड्रॉबैक डिसएडवेंटेज ऑफ द क्यू वेस्टेज ऑफ मेमोरी अमिच तो यह पो बह सर्कुलर क्यू पो तन यह सा यह अमुक ओवरकम ग ड्रॉबैक तो सह पो तथनस तो यह मे वन कि यह अतनस ड्रॉबैक ऑफ द क्यू ओके तो यह टाइम कंप्लेक्सिटी अमिक क्यू सह O of 1 ऑर्डर ऑफ 1 अमिच चूंकि यह लूप्स कर इस्तेमाल कहें तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ 1 इज द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ दिस क्यू ओके this is all about the operations of the queue and the introduction and the working of the queue. I'm part thoda karabos and application discuss. But I'm क्या से application is कच्चा से लगान applications of queue. You see queue छो गोडना से छस लगान आम तौर रियल लाइफ सिनेरियो में अगर वुचो ये इसका रिसोर्स करान शेयरेबल रिसोर्स करान सो रिसोर्स शेयर गसान मज सह इस्तेमाल करान तजन करान इस्तेमाल तजन डाटा स्ट्रक्चर अंदर लगान सह लगान क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल बन यह प्रिंटर प्रिंटर this is a printer. So these are the 1, 2, 3 and 4. 3 and 4. This is printer as 4 computer and 4 PC connect network के मज तो ये computer 1 दिवान print command यमिश क्या print print command print command print command सो चूंकि obviously at a time गसन चोनवे रिक्वेस्ट गसन फुलफिल के at a time गसन चोनवे प्रिंट के तिम गसन सीरियली वन आफ्टर द अनदर यम गसन इक्वल गसन कहें तो तेल अंदर क्या करा कम प्रिंटर क्या इस प्रिंटर पानी मेमोरी तटन टेबल बना क्यू टेबल बनावान क्यू डेटा स्ट्रक्चर तक थवान यह रिक्वेस्ट करान सह नोट कर स्टोर करान यह रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल वन दिस गोडनेस रिक्वेस्ट एम पर दिस 3 रिक्वेस्ट एम को ये एम पर दिस 2 रिक्वेस्ट एम पर दिस 4 रिक्वेस्ट यह प्रिंट करान करान ये तक मकलान गोडनेस करान ये 1 पच करान 3 सुन रिक्वेस्ट प्रिंट पच करान 4 सुन 2 सुन रिक्वेस्ट फुलफिल पच करान लास्टस 4 सुन नंबर 4 कंप्यूटर पीसी तहज रिक्वेस्ट करान फुलफिल गो 1 by 1 अंदर करान ये याद थाने खतर ये रिक्वेस्ट स्टोर करने खतर करान इस्तेमाल डाटा स्ट्रक्चर क्यूएस में बनान पन्ने मेमोरी में अतन लगान शेयरेबल रिसोर्स कह सह इस्तेमाल करने खतर इस्तेमाल क्यू डेटा स्ट्रक्चर ओके प्रिंटर ये शेयरेबल रिसोर्स कह शेयर वारिया करान नंबर 2 इस वन कंप्यूटर चूंकि तुम पता सैनिस कंप्यूटर प्रोसेसर प्रोसेसर प्रोसेस एग्जीक्यूट करने चूंकि एट अ टाइम वारिया प्रोसेस चलान कंप्यूटरस मज तिम एग्जीक्यूट करान एग्जीक्यूशन करान प्रोसेसर इस ऑपरेटिंग सिस्टम सह प्रोसेसर टाइम दिवान प्रत कुछ प्रोसेस करान एलोकेट सह प्रोसेसर सह टाइम प्रत कुछ प्रोसेस करान एलोकेट फॉर एग्जांपल कंप्यूटरस मज करान अमिस 5 प्रोसेस तो ऑपरेटिंग सिस्टम करान प्रोसेसर टाइम सह करान एलोकेट इन मज 5 करान रिक्वेस्ट गि प्रोसेसर आसन ये साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पर तक वो कित प्रोसेसर मैनेजमेंट तो यह प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम करान प्रोसेसर करान एलोकेट कचन 5 प्रोसेस 5 कायम बनान ऑपरेटिंग प्रोसेसर जरूरत ऑपरेटिंग सिस्टम
यह रिक्वेस्ट यह थवान अंदर करान सेव दिवान करान अकिस टेबलस मज क्यू टेबलस मज क्यूस मज फॉर एग्जांपल दयिम प्रोसेस सूरिम प्रोसेस एकिम प्रोसेस त्रेयिम प्रोसेस पूंजिम प्रोसेस नम प्रोसेस अमिस करान रिक्वेस्ट के एडिस प्रोसेसर ये प्रोसेसर से मकलामा काम कर गोडनेस गसान ये ट्यूस पे पचे प्रायोरिटी सेकेंडरीज पर दी जाए ये मकलामा अत करा वन बाय 4 पर अत पर 1 पर अत पर 3 पर अत पर 5 पर गो अतन अंदर गसान एप्लीकेट गसान इस्तेमाल गसान सु गसान क्यू डेटा स्ट्रक्चर गो इधर कत शेयरेबल रिसोर्स आसे तिम तिहुन टेबल बनाने खतर तिमन सर्विस दिन खतर टेबल इस्तेमाल अंदर गसान सह कुस क्यू डेटा स्ट्रक्चर होप कि तह आमुत यह क्यू समझ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन अमिच क्यूज तो ये कर खरीद क्यू एज डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो इस implementation with the help of the data with the help of the array and linked list as well as a stack. Okay, bye, see you.